Hello everyone and welcome to Forum in India. Today we are having with us Miss Monica Garkhel, who is a human rights activist and she has been a part of the POSH Department of Corporates from the past 22 years. So let us welcome her. Hello, Miss Monica, and welcome to Foreman. And thank you so much for joining with us. Thank you so much, Antara. Thank you so much for taking out time and getting connected with me and following my work and what I'm trying to contribute towards society. Thank you so much. And it's my pleasure to share my thoughts with you because it will give it, I will get a wider reach. People will get to know that what do I think about the society, what exactly I'm trying to do, what difference I'm trying to make. So thank you so much for that. Thank you. It's a pleasure for us to have you on board, ma'am. So, ma'am, my first question to you is what made you fight for men's rights? Like, is there any story or incident behind this? First of all, I would like to correct you here that I am not a men's right activist. I am a gender equality crusader. So I speak about gender equality. Definitely, yes. It's very important to, treat both the genders equally with due respect, as both are human beings, both have feelings. However, at this point in time, the whole, the demand or the grievances, the grudges that we have with the government or the judiciary is going in the favor of men because there is actually nothing which is there to protect men, Yes. even if they are victims and if they are in a serious problems. So that is all about this thing. Secondly, another part, my part two of the answer is, like you asked me that what brought me into this. So way back in 2018, so there was, you can say, a good friend of mine, a very close friend, and probably 10 years elder to me or senior, you can say my senior. So I saw him getting into this. That was the first time I got to know this. And my heart really went on for him and his family, the way they were tortured by the police and they were what all they were going through. So that's where I started Googling and started reading about it and all that stuff. So, and I did a lot of interventions in his case. At that point in time, I didn't even knew A of the 498A. Uh, so that's where I got to know, oh, this is what is happening. This is what is happening. So, like, this is how I got into it. And then I got to know more men. I've started following few of the NGOs and I heard their stories and all. So this is where I am because every day I hear a new story. It really hurts. It really hurts. It Yes. really hurts. It really hurts, So yes. it really hurts. So I thought because I've done enough in my life professionally, I have spent 22 years in my corporate world, and so I thought it's time to give it back to the society. So why not starting, helping whatever is the need of the hour. So that's what I'm doing. Okay. Yes, definitely, ma'am. Because in our country, particularly, if we talk about India, hardly there are any laws that protects men actually. Even if a man is harassed and he goes to the police station to file a complaint, the police officers are also not paying any heed and they are just shooed away from the police station saying that we cannot do anything for you. So that's really painful, and this should not be the case because no matter it's a male or female or any other gender, but all should have the human rights at least. So this is something Exactly. lacking in our Exactly. judicial Yeah. system. Yes. So unfortunately, in this war, the men are suppressed like anything. Yes. And you can see the NCRB data of 2021 and the suicidal ratio where it has gone, the men's suicide ratio. So it has increased by 7.5% and the total. And then if you again do a further analysis on it, the quantum of or the category of men is the married category. Yes, So yes. it's very
very, very unfortunate. It's very Yes, unfortunate. definitely. A few days back, we all heard about the Chandigarh University case, where Right. we saw a female student who was caught making some obscene videos of other female students studying in the same university, staying in the same hostel actually. And when she was caught red-handed, she said that she had no role to play in that. It was her boyfriend who was blackmailing her for the videos or the pictures, and that's the reason she made it. Later we also came across few more videos where the other girls who were charging her or interrogating her, they were saying that you just tell us the truth, and nothing can harm you actually, because we are going to blame the boy, and the boy should be blamed because he was the one who was blackmailing you. And when the police arrested both the girl and the boy, the media, few media houses, they actually disclosed the boy's face, but they did not disclose the girl's identity. And everybody were, kind of blaming the boy only. And the girl, if I should not mention the term maybe, but I'm mentioning the term here because it is always seen that in such cases, the women or the girl, they play the victim card, as the girl was saying that it is not my fault and it was he who was blackmailing me. And that's the reason I had to make such kind of videos. Even the police, they said that they found no such videos in the female student's phone, whereas the other girls, they were saying that they caught her making the video. So why do you think these things are happening, and why the men are not supporting men, which is something very much strange? The people are not supporting the men, but they will always support a woman no matter what kind of crime or what is the level of the crime, but they will always be supporting the women. So why do you think these things are actually happening, and how these things could be stopped actually? Okay. So मैं आपके सवाल का जवाब 2 पार्ट में देती हूँ, ठीक है? पहला पार्ट, आपने एक फिल्म देखी होगी ऐतराज, which was shot, right? Yes. So it is pure what you have seen in that movie. किस तरह से एक मैन को ह्यूमिलेट भी किया गया, उसको फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली हरेस किया गया. And who was there, the woman, जो कल उसको छोड़ करके गई थी, उसको एहसास हुआ, so one line which I still remember, कि अगर किसी औरत ने किसी पुरुष पर हाथ उठाया तो बोलेंगे जरूर इसने कुछ किया होगा, जरूर किया होगा. हाँ. और अगर किसी पुरुष ने अगर हाथ उठाया किसी औरत पर तो बोलेंगे बड़ा ही बदतमीज और बड़ा ही निर्दयी पुरुष है, औरत पे हाथ उठाता है. राइट. हमारी ये मानसिकता है कि हर हाल में हम पुरुष को ही गलत समझते हैं. बेसिकली हमारी ये मानसिकता बनती चली जा रही है, और इस मानसिकता को बनाने में कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारा जुडिशियल सिस्टम, ऑब्वियसली फिर पुलिस, सब इसके लिए जिम्मेदार हैं. हम अपने घर में भी देखते हैं, अगर भाई बहन है तो वहां पर भी, भाई बहनों में भी, अगर भाई बड़ा है तो भी बोलेंगे अरे छोटी बहन को ऐसे क्यों करा. Did you see that? हाँ. बड़ी है, अरे बड़ी बहन है. So either of the way हम एक लड़के को ही सप्रेस करते हैं. Now part 2 answer to your question is, if you know, there are a lot of versions to that Chandigarh thing. So what exactly has happened is, उसने 60 लड़कियों के वीडियो नहीं बनाए, that girl. उसने सिर्फ अपना ही वीडियो शूट करा था while taking a bath, right? Then there are 3 men involved जिनके नाम इसमें लिए गए. One is Sunny Singh, one is 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗟𝗬 वर्मा जिसका पिक्चर दिखाया गया, and one is Sanjeev Singh, who is an army officer, who is actually the culprit in this, right? So what Sunny Singh did is, Sunny Singh ने अपना फेस एक फेक प्रोफाइल बना करके 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗏 की पिक्चर यूज करके, he was in a relationship, or you can say in touch with this girl, right? और उसके बाद this was mutually consented, obviously. और अगर आप देखेंगे सनी सिंह का जो नंबर आउट हुआ है, पुलिस ने वायरल मतलब दिखाया है, तो उसमें सनी सिंह को लोगों ने स्पैमर कह के टैग करा हुआ है ट्रू कॉलर पे, राइट? सो उसको लड़की को पता ही नहीं, उसको लगा कि सनी सिंह है, कोई हैंडसम सा लड़का है, और सॉरी संजीव सिंह, मेरा कोई हैंडसम सा लड़का है, मेरा अच्छा फ्यूचर होगा. हाउएवर संजीव सिंह व्यक्ति था और उसका चेहरा जो था 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗏 का था. और वंस अगेन
जो हमारी बायसनेस है या हमारी मानसिकता है कि पुरुष को तो फट से आप उसको उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी, हर मीडिया हाउस उसके पीछे पड़ गया, जबकि उस इतना कुछ उस बेचारे ने आउटरीच झेला, जबकि उसे तो पता ही नहीं है कि एक्चुअली उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी बेचारे की कहाँ इस्तेमाल होगी। उस बेचारे को इसका आइडिया ही नहीं है। तो जब अगले दिन सुबह जगा तो उसने देखा कि ये मेरे नाम से क्या हो रहा है, एंड दैट्स व्हेन ही वेंट टू द पुलिस एंड सरेंडर्ड हिमसेल्फ। तो कहने का मतलब है कि ये हमारी और हम, अच्छा, और ये बात आपने, मैंने कई ऑडियोज पे सुनी है जो वायरल हुई है, वार्डन से लेकर यूनिवर्सिटी का स्टाफ, इवन पुलिस भी, कि इसको ऐसे करके बोलो, दिस प्रेजेंट दिस वर्जन टू द पीपल, राइट। हाँ बिल्कुल। लड़की को, जबकि लड़की ने एक वीडियो में खुद इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने ये बनाया है, और वार्डन उसको डांट रही थी, राइट। तो फिर हम क्यों उसको जो है सुपरसाइड कर रहे हैं या उस बात को छुपा रहे हैं, क्यों? सिर्फ एक लड़की है इसलिए। तो ये कानून की किस किताब ने लिखा है कि क्राइम जो है वो जेंडर देख के होता है? पर अब प्रॉब्लम ये है, आज की डेट में हमने इसको एक यूनिवर्सल बैरियर बना लिया है, और हम जो सजा सुनाते हैं या जो कानून में प्रावधान भी दिए गए हैं, दैट इज all keeping women in mind, because they think, oh, they are the most, weaker section of the society, the vulnerable people who need help. So all the laws are, and then उनको लगता है कि अगर विमेन का चेहरा दिखाया या विमेन का नाम कहीं पर आया तो उसकी मान मर्यादा जाएगी, उसकी इज्जत जाएगी, और उसके परिवार की बेइज्जती। बट देन व्हाट अबाउट अ मैन्स रिस्पेक्ट? Over the night, that boy lost his respect, and imagine what his family has gone through, he even not being knowing that what actually has happened. Right now he is out on bail. This girl, this Sunny Singh is out on bail, but 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗟𝗬 is involved because इस लड़की ने, अब इसको तो पता ही नहीं है, जबकि ये लड़की तो म्यूचुअली, बट क्योंकि उसके लिए बहुत आसान था कि कर तो देखिए अपनी इच्छा से रही थी, राइट। इट वाज म्यूचुअली कंसेंटेड बिटवीन संजीव सिंह एंड दिस गर्ल, राइट। बट उसके बाद जब वो खुद फंस गई तो उसने ब्लेम आया जो लड़के के है, ऊपर, और उसके पास जो डीपी पिक्चर था उसने वो दे दिया, और हमारी मीडिया एज यूजुअल वन साइडेड बायस्ड अप्रोच, जस्ट लाइक आवर जुडिशरी, दे वर नॉट इवन बॉदर्ड दैट ओके फेयर इनफ, अगर लड़की की इज्जत कीमती है तो लड़के की भी है। सो फर्स्ट लेट्स डू द इन्वेस्टिगेशन, let's do a deep dive into it and then speak about it. It was too early to jump the gun, but unfortunately, again, there were two men, two boys whose name, whose family's reputation got sacrificed in this whole episode. I don't know आगे इसका क्या होगा, because the investigation is still on. उस लड़की को कितनी सजा मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए अपराध तो उसने भी कुछ तो किया है, बट देखा जाए, अगर आपसे मैं मोटा मोटा बताऊं तो उसने इस पूरे एपिसोड में कोई अपराध नहीं किया। वो अपनी पिक्चर किसी को भी भेजना चाहे वो भेज सकती है। व्हाट शी डिड वाज, उसने उस बंदे का नाम फट से दे दिया, जबकि उसको खुद नहीं पता। अब एक वर्जन ये भी है कि लोग कहते हैं कि उसका आईक्यू बहुत कम है, so I don't know how she got admission in Chandigarh University. बिल्कुल वही बात है। हाँ, so that is basically a thought process, क्योंकि हमें ये लगता ही है, इसीलिए मैंने आपको उस फिल्म का उदाहरण दिया, और people enjoyed it to the fullest. I don't know, but the part which I did not enjoyed is a wife supporting a man, a husband at towards the end when Kareena fights for him. So that is the part which I like, because that's the bond of trust. So because every relationship is based on trust. Definitely, जी. Yeah. And मैम कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट हुई थी जहाँ पे, ये आई थिंक कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी, जहाँ पे एक 12 साल के टीनेजर लड़के को ब्रूटली रेप किया गया था, वो भी बाय 3 टीनेज बॉयज, और उनमें से एक लड़का उसी विक्टिम का कजिन था। एंड जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, डॉक्टर्स ने ये कहा कि दिस केस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द निर्भया केस, जो कि 2012 में दिल्ली में हुआ था। एंड द बॉय ही डाइड ड्यू टू द इंजरीज। बट अजीब बात ये है कि ये जो इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है,
वो लड़का भी किसी का बेटा है और वो भी इतने कम एज, वो सिर्फ 12 साल का लड़का था और उसको लड़कों ने रेप किया इतना ब्रूटली और इतना अब्यूज किया बुरी तरीके से कि वो आई थिंक हार्डली ही सर्वाइव्ड फॉर 2 to 3 days और उसके बाद I think he died. 4 days, fourth night हाँ, he यस, passed ऐसा away. ही कुछ, मे बी लेस, इट वाज लेस देन अ वीक, एक हफ्ते से Yeah, कम ही वो सरवाइव कर पाया, लेकिन because the injuries were very barbaric. The rod was बारबरिक, inserted. बिल्कुल, Yeah, हाँ। yeah. तो जब ये निर्भया का केस हुआ उस टाइम पे ये जो न्यूज है ये हर जगह फैल गई एंड देयर वर मैसिव प्रोटेस्ट एवरीवेयर, देयर वर कैंडल लाइट मार्च एंड बहुत मतलब देश को जो हिला के रख देना जो होता है वो हुआ था उस टाइम पे। लेकिन ये भी एक सिमिलर इंसिडेंट था, लेकिन इस न्यूज के बारे में बहुत ही कम मीडिया चैनल्स ने कवर किया। फॉरमैन इंडिया ने कवर किया था इसको, लेकिन जो बाकी जो न्यूज चैनल्स है, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में, यहाँ पर नाम नहीं ले रही हूँ किसी का, लेकिन उन्होंने किसी ने भी इस न्यूज को कवर नहीं किया है और कोई प्रोटेस्ट नहीं, कुछ नहीं। जबकि वो बच्चा एक जो इतने कम उम्र का एक बच्चा, उसको रेप किया गया, उसको मार डाल दिया गया, लेकिन कहीं पे कोई प्रोटेस्ट नहीं ना। लड़कियों की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन जो मर्द है, जो द मैन, दे ऑल्सो डिड नॉट मेक एनी साउंड, दे डिड नॉट प्रोटेस्ट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है, क्यों मीडिया हाउसेस ने इसको कवर नहीं किया? क्या लोगों में अवेयरनेस अभी तक जागी नहीं? और अगर नहीं आई है अवेयरनेस तो क्यों नहीं आई है, और क्या करने से लोगों तक ये बात पहुंचेगी? क्योंकि टुडे वी आर फाइटिंग फॉर मेंस राइट्स, बट जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, अगर उन्हीं के अंदर ये चीज ना आए कि हमें लड़ना है खुद के लिए क्योंकि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग आउट देयर, तो ये डू यू थिंक आर वी रियली गोइंग टू विन दिस बैटल? Yeah, yeah. See, if you will ask me to be very, very honest, I will say no, we cannot. Because the maximum population of the country is men, right? Someone who is badly affected by judiciary, by laws, by system, by society is men. Highest number of taxpayers in the country contributing towards the economy is men, Men. right? All kinds of work, be it physical, be it mental, be it other, taking all kind of tasks and the responsibilities, someone who is fulfilling is men, right? However, unfortunately, even still men are not aware. It's not that they are not aware, they're aware, but don't want to be a part of the change. I'm telling you very frankly, openly, because this is something I have been experiencing since 2 years now. If I have to do any kind of a protest or anything, any kind of thing, I really have to call men from their houses, really have to invite them. I'm being very honest. वो कहते हैं ना कि अगर आप अपनी सहायता खुद नहीं करेंगे तो आपकी सहायता भगवान भी नहीं करेंगे। भगवान भी नहीं करेंगे। तो उसके लिए देखिए, ये जो कानून बने महिलाओं के लिए किसी वजह से बने, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि इस पे कुछ गलत है और ये गलत बने, पर इसका जो आज मिसयूज हो रहा है वो गलत है, उससे मुझे प्रॉब्लम है। हाउएवर, आप ये देखिए, ये रातों रात कानून बन गए और इसमें ठीक है 498A is something which Supreme Court says it is used as a personal tool to settle scores between two people or the families. It is used as it is a legal extortion and legal terrorism. A lot of verbatims that has been even Supreme Court, Honorable Supreme Court has given. However, even they have understood. But then आप ये देखिए कि ये लॉज बने क्योंकि महिलाओं ने इसके ऊपर एक रिगरस फॉलो अप किया, वो अपनी डिमांड को लेकर अड़े रहे, पीछे पड़े रहे। क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने, महिलाओं ने, कि आप हमारे को प्रोटेक्शन दीजिए, राइट? व्हाट मेन आर डूइंग टुडे टू सीक प्रोटेक्शन? Just by sometimes coming on social media, writing 2 tweets or maybe doing an Instagram post doesn't help. We have to be on the shop floor, we have to be on the ground, on the field. Now the new thing, marital rape, do you think it will come? What do you think?
नाउ इट माइट कम, क्योंकि जिस तरीके It से might, प्रेशर उनके ऊपर दिया जा रहा है बाय दिस, right? मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ भी किसी का, लेकिन जिस तरीके का हाँ, प्रेशर बनाया yeah. जा रहा है. Again, I am not taking names. However, we still have time. We still have time. We can do a lot of research. We can do Yes. a lot of PILs. But then for that, we have to come together. We have to come out as men. I'm talking on behalf of men because I support them. Because आज उनको ही support की जरूरत है. महिला को तो support करने पूरी दुनिया ही पूरी बैठी है. दुनिया है. उसकी तो एक स्टेटमेंट पे एक रेप की एफआईआर भी रजिस्टर होती है. फिर बिल्कुल. रेप चाहे हस्बैंड के नाम पे लगा दिया हो या 80 इयर्स के फादर इन लॉ के नाम पे लगा दिया हो. सो अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत एफर्ट डालने की जरूरत है मेन को. हेंस दिस इज द रीजन. So despite of so many NGOs, so many people, individual contributors like me, देखिए एक अकेले कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा. कुछ नहीं कर अकेले सकता. एक उंगली की ताकत कुछ नहीं होती. तो हमें मुट्ठी बनने की जरूरत है. और मैं हमेशा अपने हर मैसेज पे, आप मेरे सोशल मीडिया पे भी देखिए, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ स्टे यूनाइटेड, स्टे स्ट्रांग, स्टे यूनाइटेड, because that is only going to take us somewhere and we may be able to get some changes. And अगर जो चेंज आ गए तो आज की जनरेशन तो ठीक है, हम कुछ बचा ही लेंगे इसमें से, बट आने वाली जनरेशंस को एक अच्छा भविष्य देंगे. वरना आप सोचिए जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके भविष्य का क्या. बिल्कुल. राइट. और ऐसा कई बार देखा गया है कि कई बार नहीं, हमेशा ही ये देखा गया है कि अ मैन विल ऑलवेज कम इन सपोर्ट ऑफ अ वुमन हु इज अ विक्टिम. लेकिन अगर किसी मर्द के साथ बुरा हो रहा है, then the other man will not support that man. Maybe they will make a mockery out of it, or they will just say कि यस. जो हो गया छोड़ दे, जाने दे, कुछ तो तूने किया ही होगा जिसकी वजह से तुझे भुगतना पड़ रहा है. हाँ. This is the सो main dialogue जो हर किसी के मुंह से आएगा, unless and until the other person is in the same situation और उसने भी कुछ वैसा फेस किया है. I till date haven't observed, और मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है जो कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब फेस नहीं किया बट फिर भी दे आर सपोर्टिंग. मैक्सिमम जो हमारे फॉलोअर्स भी है वो लोग ऐसे ही लोग हैं मैक्सिमम, जिन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे चीजों को फेस किया है, एंड दैट्स द रीजन कि वो आज सपोर्ट कर रहे हैं इस मुद्दे को. अदरवाइज मैन दे आर नॉट सपोर्टिंग, और वो हमेशा वो भी ये सोचते हैं कि मैन आर एक्चुअली हरासिंग वुमेन, और इसीलिए ये सब लॉज बनाए गए हैं. एंड अगर किसी मर्द के साथ गलत हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती है, जबकि दिस इज नॉट ट्रू. जबकि वही वही कहने का मतलब वही है कि हम रियलिटी से, वी डोंट वांट टू शेक हैंड्स विद द रियलिटी, रियलिटी. unfortunately. So when I say we, I mean by men. So this is actually they have to really overcome this weakness or this thought process or this thought of themselves, if they really want a better future or the safe future for their new generations. Because I also get to interact with men. बोलते हैं नहीं मैम मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो रिलेशनशिप परफेक्ट है. I mean, first of all, there is nothing perfect in this world. कोई perfect relationship नहीं होता. Either of the gender, either of the person would be compromising, adjusting with the situations, या फिर आपके बीच में जिसको कहते हैं mental faculties की understanding और coordination बहुत अच्छा होगा. But मैं ऐसे उन्हीं लोगों को भी जानती हूँ जो अकेले में बैठ करके they speak then, कि क्या करें यार, अगर मुंह बंद नहीं रखेंगे तो क्या करें. The same set of men saying this. So it's high time they should accept it and be a helping hand. It's not about it कि unless कि मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं क्यों इसमें जाऊं. It's not about that. आप देखिए अगर किसी रोड पर कोई विमेन if she is fighting और कुछ झगड़ा हो जाता है किसी लड़के से, 4 more women will jump over there to help her. Obviously men will also jump. Men will also jump. Men will also jump, right, without knowing the fact. और अगर सामने लड़का है तो 2 थप्पड़ भी मार देंगे, थप्पड़ मार देंगे. दिस इज द कॉमन सिनेरियो. पहले थप्पड़ However, मारो फिर पूछो कि क्या हुआ है. however, अगर यही चीज आप जेंडर्स रिवर्स करें, सो क्या पुरुष की मदद करने कोई महिला आएगी कभी? मैंने नहीं देखा.
So it is only your sister, your mother, who can understand this, and probably they can also understand it because उनके भी नाम implicate होते हैं cases में. Varna, I'm telling you, everyone is very, very in their own only me zone. Why should I? Why should I? And most of the times, you know, they start nagging with their son, brother, तेरी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ, हम तो कहीं के नहीं रहे, you know. But then that's not the time. The time is to be united. Like father है, तो father भी तो एक man है. अगर वो एक अपने बच्चे की तकलीफ नहीं समझ पा रहे तो कौन समझेगा? But it is high time. I tell everywhere, be it any age, anyone, you know, senior citizens, parents, do help your children understand things, what is going on, and be a part of this change. Because अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ इसमें बदलाव होगा नहीं, ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा. अब you know, this किसान वाला is a very, very real example which we saw just 2 years back. You know, unless they did a protest, they were on roads for months and months. The bills were reversed. Otherwise, the bills pass हो गए थे. बिल्कुल. So, you know, मैं जब भी कभी कोई, you know, whenever I have a meeting with a group of men or something, I tell them this is a lesson. Be a student of life, learn from this, how they got their rights back, what they wanted. छोड़ दो थोड़े दिन. I understand they have a lot of responsibilities and all that stuff, you know. But आप देखिए ना, उन लोगों ने भी तो अपना सब काम काज छोड़कर वो लोग रोड्स पे बैठे थे धरना देने के लिए. तो वो बहुत जल्दी अभी, you know, there are pool of men who get collected on जंतर मंतर and lot of things. अभी 2 अक्टूबर को भी हुआ था and all that. But क्या भारत के पुरुष की आबादी सिर्फ इतनी ही है जितने वहां पर आते हैं? अरे एक दिन के लिए सारे पुरुष एक जगह पे आ जाओ, उस शहर में जगह भी नहीं बचेगी. बिल्कुल सही बात है. Right? So this is, you know, my very humble request to men, that please come forward. It is not necessary ki, you know, you get into this and then you will probably understand. So one has to be aware what is, and you know, this is every next door story now. अब ये इतना अनकॉमन नहीं है. आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले ये लोग बोलते थे, अरे इनकी तो बहू ने ऐसा कर दिया, you know, सोसाइटी का एक टैबू था, स्टिग्मा था. अब वो सब नहीं है. You know, आज हर दूसरे घर में है, ये हर दूसरे घर में है. Family courts are just filled. There is no place. Look at the family courts. बिल्कुल. और इवन द लॉ मिनिस्टर, उन्होंने और कहा है कि फैमिली कोर्ट्स को और ज्यादा फैमिली कोर्ट्स बनाओ, क्योंकि केसेस इतने पेंडिंग हो गए कि नहीं संभल रहा है जो एग्जिस्टिंग फैमिली कोर्ट्स है. I remember on one of his article or on Twitter or something post, I wrote कि और कोर्ट्स बनाओ बट इनको भी निपटवाओ और कानून में बदलाव लाओ. I wrote on that कि कानून में बदलाव लाओ. बिल्कुल. और जैसे कि और एक एक्ट है हमारा, जिसे कहते हैं पॉश एक्ट. तो मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं है कि पॉश क्या है, और ये जो कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट है. और इसमें सुनने से लगता है कि ये मे बी सिर्फ फीमेल्स के लिए है जो ऑफिस गोअर्स है और उनके बॉस या कलीग्स हरास करते हैं, तो वो तब अप्लाई कर सकते हैं. बट मैंने एक्चुअली पर्सनली ऐसे बहुत लोगों से मैं पर्सनली मिली हूँ. इवन 1-2 लोगों ने इंटरव्यू भी दिया है हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे दे वर मेल्स एक्चुअली, और उनको हरास किया गया है बाय द फीमेल बॉस, और उसे कंपनी से निकाला गया है, और ही हैज लॉस्ट हिज जॉब एंड ही इज फाइटिंग द केस. तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को जो है थोड़ा पॉश एक्ट के बारे में बताएं, और कब और कौन सी सिचुएशन में वो लोग इस एक्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द मेल्स. So POSH is again a gender neutral law which was passed in 2013. As you said, prevention of sexual harassment at workplace specifically, right? So nowhere it is mentioned that the victim can only be women and victim cannot be a man.
Like we just spoke about a film which was 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗟𝗬, so we saw that, right? Victim was a man, right? So the thing is, again, society and social stigma. If the man goes to the internal committee, the POSH committee, which is there in any organization, and makes a complaint, do you think, first of all, will they take it seriously? Forget about it. Will he have a courage, first of all, to write a complaint against a woman who is exploiting her, or probably, sending him some kind of messages or whatever? Because this can be any which ways. This can be any which ways. It is even verbal, non-verbal, some signs, some messages. It can be any which ways, right? So, आपको लगता है कि एक पुरुष की इतनी हिम्मत होगी? But होनी चाहिए. होनी चाहिए. They should go and they should do it. And the onus lies on the internal committee to do a very, very fair investigation. And if he has, everything works on evidences, be it the court of law and be it this thing. Even if a girl also, if a girl files a POSH complaint against a male colleague or something, so usko bhi evidences to dene hain, investigation to hogi. On what basis? Just by mere alleging someone ki isne aisa mujhe dekha, उसने ऐसा आपको देखा, ऐसा देखते हुए किसी ने देखा? He gave you some signal, something, some kind of ishara or whatever. So is there an eyewitness to it? Right? Because शायद maybe किसी दिन बॉस ने छुट्टी देने से मना किया होगा, या तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब कहीं ना कहीं हम उसको सेटल द स्कोर्स कर लेते हैं, right? So कहने का मतलब ये है कि men are not doing it. They should be doing. This is something which is gender neutral, and they should be doing it. There is no harm, and these are, kept very confidential. These are not shared with anyone. And in these things, because I have been a part of corporate industry for 22 years. I am from a HR background, so I myself was a part of a POSH committee. So इसको जो है बहुत confidential रखा जाता है, यहाँ तक कि जो evidences हैं, अगर कोई आई विटनेस है, कोई जो आपके साथ में co-workers या colleagues है, अगर आप उनसे investigate भी करते हैं, तो उनके साथ भी ये confidentiality का clause भरवाया जाता है कि आप ये बात बाहर discuss नहीं करेंगे. Because if it goes out, the committee, it doesn't goes out from the committee. It goes out by the people who are involved in it, be it the victim or people from the victim side, be it people from the accused side. So, like abhi jo piche 1st September ko, this gentleman Amit Kumar, he was also slapped by a POSH, and he was 1.5 months old in the system in that company. He wrote a 5-page suicide note. And Yes. And unfortunately he was not heard. But then, family is still demanding an answer from the Company. the organization. Yes. But I don't know, I haven't touched base this since few days, that what exactly happened into this. But होता क्या है कि जब आपको लगता है कि हमें जस्टिस मिलेगा ही नहीं, या हमें जवाब ही नहीं मिलेगा, तो आप भी उम्मीद छोड़ देते हैं. That is something. And especially, imagine the condition of that lady who lost her husband. Imagine the condition of the parents. कितनी देर लड़ाई करेंगे वो जिनका बच्चा चला गया? बिल्कुल. Right? कब तक So लड़ेंगे? this is कब तक लड़ेंगे? But then there are ways of, if the organization, the POSH committee, doesn't addresses it amicably or in the right spirits, then one can go and file private complaints. Definitely one can do that. However, it is important for men to raise their voice if there is something which happens during the or in the workplace. It is very important. तो मैम अगर लाइक कोई एक मेल एम्प्लॉय है और उस पे उससे किसी कलीग ने लाइक कोई एलिगेशन लगाया, एंड जो पॉश कमिटी है, पॉश कमिटी ने भी अगर उसकी बात नहीं सुनी,
then he can file a complaint, like Private tab complaint. private complaint. Okay. Okay, so because there has been such cases जहाँ पे जो male employees है उनकी बातें नहीं सुनी गई थी by the POSH committee. They were just siding with the female employees, and also उस male employee ने ये तक कहा है कि आपने जो मुझ पे allegations लगाए हैं उसके आपके पास प्रूफ कहाँ है? तो उसके एचआर ने उसे कोई प्रूफ नहीं दिखाया। उसने कहा है कि मुझे बस कंप्लेन मिला है, हम आपको प्रूफ नहीं दिखा सकते, हमारे पास जो प्रूफ रखना है हमने रख लिया है, आपको वार्निंग दिया जा रहा है, आपको सस्पेंड किया जा रहा है। तो ये सब केसेस हुए हैं जहाँ पे जो कंपनी के मतलब उसके जो एम्प्लॉयज है, उनके जो इमीडिएट बॉसेस है, वो भी उनकी बात नहीं सुनते हैं। बिना किसी एविडेंसेस के वो उन्हें या तो सस्पेंड करते हैं या निकाल देते हैं या वार्निंग देते हैं, और फिर जो वो पॉश कमेटी तक जाती है तब भी वहां पर भी उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि जब ऐसी सिचुएशंस हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। No, even in the court of law, like tomorrow, let's say, someone, let's say I am alleged, for something. So unless the person who has alleged me brings the evidences, it cannot sustain. It cannot sustain. So one can go and file a private complaint with regards to that, because again, as I told you, हमारी ये सोच है, लड़की है क्यों झूठ बोल रही होगी, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ कुछ होगा। तो हुआ होगा, वरना इसको क्या पड़ी। मतलब हमारा ये सोचना है कि why would she put her self-respect, her reputation on stake? But no one knows actually the cooked story, concocted story, the thought process behind it. So we need to come out of it, and men need to be more responsible about it. See, आज मुझे मेरा self defense तो खुद ही करना है. I have to do my self defense. It's very important. So it's a kind of self defense. Definitely. Excuse me. So, any message that you want to give to our audience? One thing that I would want to humbly convey to men is, be united, support each other. Else, things will be very difficult for us, and more families will get disturbed, and any which ways, the institution of family system and a lot of other things, the culture and everything is at stake. So it is primarily a man's responsibility. Now, if the viewers will listen, they will say even Monica ma'am was also saying कि responsibility हमारी है, हम कितनी responsibilities उठाएं. But सवाल ये है कि इसकी जरूरत किसको है? जिसको जरूरत है उसी को कदम बढ़ाना पड़ेगा. So that is one thing. And another thing I would like to convey to people, so treat people as human beings, irrespective of gender, and crime has no gender. So like we have seen series of, forget about these domestic violence and 498A, this matrimonial matters. However, look at the thought process of women and girls, where it is going. Few days back, I think you would have heard a news, this guy Mehul Bhatnagar from Jodhpur, the class 12th guy. So how, and he was behind the bars, no one heard about him for POXO and all that. So how unfortunate. And today the reality is out. Now the kind of, social stigma that has gone, or probably, the way this tender age, 18 years old boy has perceived all these things. I mean, it's so difficult, to take out these things from his mind. Like जैसे हम निर्भया के केस में बोलते थे ना कि इस लड़की के दिल पर तो ये सब चीजों ने घाव कर दी है, ये जी तो रही है पर इसके उसमें से कैसे निकालेंगे. There was a beautiful web series also that came on that Nirbhaya, Delhi 6, right? Delhi crime, right? Yeah. Yes. So तो ये चीज उतनी ही एक लड़के पर भी लागू होती है ना. वो 12वीं क्लास का लड़का है, 18 साल शायद अभी पूरा हुआ या हो गया होगा,
उसके दिल और दिमाग पे इस एक वाकये ने जो चोट पहुंचाई है, या जो उसको मतलब स्ट्रेस आ गया होगा, या जो भी, वो उसको निकालेंगे कैसे? और मुझे लगता है शायद वो पूरी जिंदगी ये महिला नाम के शब्द से डरता ही रहेगा। हो सकता है अपनी मदर और सिस्टर से भी डरने लग गया हो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इंसान तो इंसान ही है ना भाई। ये थोड़ी ना है कि पुरुष है तो उसकी रगों में खून नहीं दौड़ता है, उसको तकलीफ नहीं होती है, उसको रोना नहीं आता है, उसको चोट नहीं लगती है। उसको वो सब कुछ होता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। सो सिर्फ जेंडर के तराजू पे हम उसको ये नहीं तोल सकते, और ना ही सिर्फ जेंडर ये है तो किया ही होगा इसने। सो माई ओनली हम्बल रिक्वेस्ट टू पीपल इज दैट have a broader vision, and be a gender equalist, see both the genders equally, and that is what I request our government and our judiciary also. आप देखिए इतने फॉल्स केसेस में देयर इज एक्विटल, पेन के एक्विटल होते हैं, ठीक है। अब किसी विमेन को आपने सुना आज तक सजा होते हुए? No, or women को I guess they do not go for lifetime imprisonment for like in case of women, और उन्हें फांसी की Yes, सजा भी नहीं होती है। मे बी हार्डली नहीं दे आर होती। गोइंग 7-8 साल के लिए मैक्सिमम जेल जाते हैं, उससे कम, उससे ज्यादा तो There नहीं are सुना है मैंने। there are 4 girls in नागपुर, आई थिंक उन्होंने 4 महीने में पता नहीं 60 या 65 बच्चे काट के खाए थे, कुछ ऐसा केस था। सो दिस, अभी उनको दिस व्हाट डू यू से फांसी की सजा सुनाई गई थी। हाउएवर अब इसको खींचते खींचते 18 साल हो गए हैं। दिस हैज गॉन टू द पीएम लेवल आल्सो, and all the levels, but they said no, there can be no deferment. जो भी आप, you have been sentenced to life, तो ये यही रहेगा, इसमें changes नहीं होंगे। However, again, there is a woman, they are not doing it. 18 साल तो वो जेल में बैठ के आराम से जी रही है। So, बिल्कुल। अभी आप इसमें देखिए ना, 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗟 वर्मा, उसका कोई कसूर नहीं है। उस लड़के को तो कितनी दहशत आ गई कि वो दहशत में जाके पुलिस को खुद सरेंडर करा उसने जाकर के। उसका कोई कसूर नहीं है। एंड द फर्स्ट वन सनी मेहता, वो भी उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड था। ओके। तो उसने नाम मैनिपुलेट करे, चेहरा उसको नहीं पता, नाम उसका और चेहरा उसका बता के, एंड बट एक बेगुनाह को फंसा दिया। एंड एज यूजुअल वी ऑल पीपल जंप द गन, कि हाँ लड़का है, इसने किया होगा। बट किसी ने ये नहीं समझा कि वो लड़का किस ये सब क्यों मंगाएगा, क्या मोटिव होगा। पहले आप मोटिव तो समझिए। And police should also, do very, very fair investigation and detailed investigation, because on most of the occasions we have seen, because police didn't touch base all the points, did not connected the dots well, hence the case went onto the trial. वरना आप देखिए, अब ऐसे तो नहीं है ना, 97% जो केसेस हैं मैट्रिमोनियल या 498 के, वो झूठे क्यों निकलते हैं? Conviction is 3%, मैक्सिमम आर फॉल्स केसेस, राइट। ये तो वो है जिसमें जो चार्जशीटेड हुए, ये, और दैट डेटा इज डिफरेंट कि पुलिस ने कितने क्लोज करे। तो पुलिस को ही समझना चाहिए कि मतलब आ रहे हैं। नाउ जस्ट बाय सेइंग दैट मेरे हस्बैंड ने मेरा रेप किया था, जी कब किया था? 6 महीना पहले किया था। ऑलराइट, सो यू आर कमिंग नाउ, what were you doing for 6 months? And then, like a stupid procedure, they will go for medical. After 6 months, what will they achieve out of that medical? that's what. So police also needs to apply their logic and senses, because they deal with these things day in day out. So उनको तो बहुत जल्दी समझना चाहिए, समझ जाना चाहिए। हाँ, but then let's hope for the best, and let's see more and more men come forward, and it's like उनको लगता है कि दुनिया को पता ना चल जाए, मेरी तो इज्जत नीलाम हो जाएगी, मेरी इज्जत दांव पे आ जाएगी। बट उस दिन क्या होगा जिस दिन यू विल बी स्लैप्ड बाय दीज केसेस और पॉश और व्हाटएवर, तब तो विदाउट पुलिस यू आके बीइंग वैसे एट भी एनी आपको फॉल्ट। उठा के लेके जाएंगे ही सबके सामने।
whatever will happen, because us din bhi to hoga. So there is no harm in being, wo kehte hain na, prevention is better than cure. Yes, definitely. So be preventive. There's no harm. COVID has taught us, be a student of life. Those who, who got affected by COVID or what, but others were taking a lot of precautions. There are set of people जिनको पूरे 2 साल में एक बार भी COVID का कुछ issue नहीं हुआ. So it is only precaution, preventive measures they have taken. बिल्कुल. So we have to do that. I think we have learned a big lesson. So ये तो जिंदगी में, क्योंकि COVID तो आकर चला गया. But अगर ये laws change नहीं हुए, this is a bigger COVID. जी. So one day we will not be left by any men, unfortunately and sadly. जी बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एक दिन रियलिटी बन जाएगी that we won't be having any men. बन चुकी है रियलिटी. आप सुसाइडल डेटा देखिए, बन चुकी है रियलिटी. और बहुत दुख की बात है कि नीचे से ऊपर तक सब इसको देख करके आंख मूंद लेते हैं. अगर इतने परसेंटेज में मैरिड वुमेन, अगर sorry to say, I am saying because the men are not being heard. I'm saying. So there is a deep pain inside, hence I'm saying. But then अगर यही genders reverse करके ये ratio, ये figure आया होता, तो अब तक सारा मार्च हो रहा होता, रोड पे कैंडल मार्च से लेकर और पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता, रातों रात सब चेंज हो गया होता. बिल्कुल. So men can't be treated like that. At least they are human beings. So they can't be always an unheard gender. They should be heard. Yes, they cannot be an unheard gender. True, very true. That's all I would say. So Miss Monica, thank you so much for joining us. And it was wonderful talking to you. और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने जितने भी points आज रखी है हमारे सामने और बातें बताई है, लोग उन्हें समझेंगे उस बात को, and the men, they will be united and they will come together, because if they are not coming together, nothing is going to happen. And the laws will always remain gender biased as it is now. So we are really, really hopeful that things will change very soon. Yeah, I hope so, and hope this gets hit, or this gets strikes to the mind of the men, and they take a step forward. So that is a real victory for all of us. So thank you so much. Thank you so much once again. Yes. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you.